So, how are you doing, Yes, ma'am? sir. I'm doing great, sir. And I was waiting for you. Actually, you didn't send me a message, so I thought you were busy somewhere. Same here with me, sir. I am waiting for you also. Oh my God. Because nowadays my winter vacation is going on, so I thought if you have free time, so you will be text me. But I already told you, now, whenever you have free time, you can just drop me a line and we can connect anytime. Okay, sir. Okay, so we're gonna have a rapid fire round today, all right? And I'll ask you some sentences in Hindi, and you have to say them in English in your own words, right? Don't translate my sentences. So, एक पहला सेंटेंस है आपके लिए कि यार हाँ, आपके लिए पहला सेंटेंस है कि उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में पूछने के लिए कॉल किया. डोंट ट्रांसलेट, जस्ट से दिस इन योर वर्ड्स. Could you repeat, sir? I couldn't hear you. उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में पूछने के लिए कॉल किया. एक ऑनलाइन हमारा जो कोर्स होता है ना, उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में पूछने के लिए कॉल किया. He called me to ask about the course. एग्जैक्टली, यू सेड इट परफेक्टली. लेकिन इसमें ना एक्शन में जैसे आपने ही अपनी तरफ से जोड़ दिया है, तो एक्शन में क्या होता है, जब हम जेंडर नहीं जानते हैं किसी व्यक्ति का या जेंडर स्पेसिफिक हम मेंशन नहीं करना चाहते, तो हम दे ही Yes. कह देते हैं एक सिंगल व्यक्ति के लिए भी. तो ही और शी पता है तो कह देते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं बताना चाहते हैं या पता ही नहीं होता, तो दे कह सकते हैं दे कॉल्ड मी टू आस्क अबाउट माई कोर्स, राइट. अब उन्होंने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. उन्होंने ये पता करने के लिए कॉल किया कि हम कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं. क्या क्या सिखाते हैं, उन्होंने ये पता करने के लिए कॉल किया कि हम कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं. And they called me to ask for what we provide in our course. डेफिनेटली सही हो जाएगा सेंटेंस. और थोड़ा सा फॉर हटा देंगे वहां से जो आपने कहा. सो दे कॉल्ड मी टू आस्क व्हाट ऑल वी टीच What इन all? आवर कोर्स या व्हाट ऑल वी प्रोवाइड इन आवर कोर्स, राइट. Oh. मैंने उनको कहा कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो. I told them text me. ये भी चल जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन. और लिखते समय इसको हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे कि हमने इसको डायरेक्ट स्पीच के तरीके से कह दिया, आई टोल्ड देम टेक्स्ट मी, राइट. और अगर मैं कहूँ मैंने उनको मैसेज करने के लिए कहा, तो अपने शब्दों में बताएंगे, सो आई टोल्ड देम टू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, To text राइट. onwards. जैसे हाँ. ओके, सो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पीछे कौन खड़ा है. कहना है इंग्लिश. Now I am asking you हाँ. who is standing behind you. ओके, सो अब मैं आपसे ये पूछ भी रहा हूँ, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश. हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. It's my son, sir. ओके, हाउ ओल्ड इज ही. He is a 10-year-old. He is 10 years old, right? And how many kids do you have? I have only son, sir. Okay, he's the only son. And where is your husband right now? My husband is outside of the room. Okay. He is doing इसमें बस छोटा सा एक एरर है कि माय हस्बैंड इज आउटसाइड ऑफ द रूम. ना ऑफ हटा दो यहाँ से, माय हस्बैंड इज आउटसाइड द रूम. outside the room. हाँ. तो थोड़ा सा अच्छा स्मूथ साउंड करेगा बस सेंटेंस. ओके. एंड व्हाट आर यू डूइंग ऑन न्यू ईयर, मैम. I am just now writing my diary, preparing some resolutions. Okay, so what all have you written? I have, sir, dream about the my YouTube journey. So me and my son just try to make a resolution about the upcoming years and 2025, and especially in the YouTube journey. We usually making the videos regarding the words and phrase and new meanings. So we are just taking the resolutions and making a list of the resolutions. Okay, so do you already have a YouTube channel, ma'am? Yes, yes. We have started last year a YouTube channel, sir, but some issues there. We are not continue there and just stopped. And now we created a new channel, sir, and uploading the videos. Sometimes the project related to my son, and sometimes I also record some videos, sir. Okay, so what kind of videos do you record? Like, do you teach Just English or any making other subject? no, no, sir. It's related to English and new words and new phrases. Okay.
And For how shorts, and sometimes I also connect some students and co-learner in the Skype application. So some conversation video also. okay, and how many videos have you uploaded to that channel? So in the last, my previous channel, we have uploaded almost 300 video. Okay. And but no that no channel that between I had a dengue last month, and after that the dengue I feel some lazy, and so we stopped there. The channel is almost dead. We can't do with this channel, so we created new channel. New channel we have 20, I think that 20 videos, Okay, so have you deleted? including the shorts also. Okay, so have you deleted that channel, or is this still there on YouTube? It is still there, sir, YouTube, but there is a no view. If we upload the video, so one or two view only view usually comes there. And We usually get there our okay, and videos. when you upload a video to your new channel, how many views do you get there? It is also no, sir, very new, only the 20 subscriber. And earlier we have a 500, and more than 500 subscribers. So that time the channel is doing well. But nowadays, we are not to popularize and no share the link of the new video, new channels, my. So there is only 20 subscriber. Okay, so there are only 20 subscribers. And when did you last upload a video, ma'am? Today, sir, about the new year and wishing the new year, especially my student. Okay, so that could be the reason. You know what happens? I Because have I consistency have is uploaded. most important. Because you know what happens? Suppose you uploaded a video today and you don't upload another video for next 1 month, then YouTube will think that you're not serious. Okay. Have wanted. Okay. ओके, तो अब मैं आपसे कुछ एक हिंदी का सेंटेंस पूछता हूँ, आपको उसको बोलना है कि मान के चलिए कि आपको कहना है कि हम छुट्टियों पे कब जाएंगे। When we will go on holidays? व्हेन विल वी गो, विल कर दो बस, व्हेन When विल वी गो ऑन वेकेशन, राइट। अब हस्बैंड ने कह on, दिया कि 2 महीने बाद जाएंगे। we will go after 2 months. ओके, आपको कहना है 2 महीने तो बहुत लेट हो जाएगा। I think it's too late. 2 months, it's too late. आई थिंक 2 मंथ्स विल बी टू लेट, राइट। और अगर आपको कहना है कि 2 महीने बाद मुझे छुट्टियां नहीं मिलेंगी। After 2 months, it's not possible for me to take leave. या एग्जैक्टली घुमा के कहा लेकिन सही तरीके से कह दिया। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो अभी चलते हैं। The vacation is going on now, so हाँ, वेकेशंस आर गोइंग vacation. ऑन, तो ऐसे कहा जा सकता है वेकेशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो व्हाई नॉट गो राइट नाउ। Vacations now. Yes, yes, sir. और Yes, yes. अगर कहना है कि अगर हम गए तो कहाँ जाएंगे। If we go, so where will we go? ठीक है, आपको कहना है कि मनाली पहुंचने में कितना समय लगेगा। How much take time to reach Manali? ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। How long will we take to reach Manali? हाँ, विल इट टेक या विल वी टेक टू रीच मनाली या टू गेट टू मनाली, दोनों तरीके से कह सकते हैं। अगर आपको कहना है कि मनाली दूर रहेगा, ऐसा करते हैं दिल्ली चलते हैं। I think Manali is far from, so let's go to Delhi. हाँ, आई थिंक मनाली विल बी फार, वी I शुड गो think टू Manali दिल्ली will be far. इंस्टेड। We should go to Delhi. इंस्टेड कर दिया तो आपने बस थोड़ा एक्सप्रेशन दे दिया कि बदले में, या सो मनाली विल बी फार, सो आई थिंक वी शुड गो टू दिल्ली। इंस्टेड लगा देंगे या कंपलसरी नहीं है इंस्टेड की भी, वहां पे जरूरत रह नहीं गई, वैसे लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको किसी से पूछना है, ठीक है, कि आप आखिरी बार कहाँ घूमने गए थे। Last time, where did you go to visit any place? चल जाएगा, वेयर डिड यू गो लास्ट ऑन अ वेकेशन। When did you go वेयर डिड यू last गो time लास्ट ऑन अ वेकेशन। on the vacations? या फिर इसको थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर जो है आगे पीछे कर लेते हैं, वेयर डिड यू लास्ट गो ऑन अ वेकेशन। When did you last go on the vacation? अब यहाँ पर ऑन है तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन रह जाते हैं। वेयर डिड यू लास्ट गो फॉर ए वेकेशन भी कहा जा सकता है। अगर कहना है Visit a place भी बोल सकते हैं सर। हाँ, विच प्लेस डिड यू विजिट,
फॉर अ वेकेशन लास्ट। Which place do you visit last time? लास्ट टाइम कर दीजिए। अगर आपको कहना है कि आखिरी बार आप किसके साथ गए थे, Mm, Whom did you go with last time? चलेगा। मैं जहां भी जाता हूं अकेला जाता हूँ। Wherever I go, I usually go alone. राइट, मुझे किसी के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। I don't like to go along with anyone. चलेगा। और वैसे भी मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ। वैसे भी नहीं। ये वैसे भी जो I है don't खाम खा का है, आप वेल कह सकते हैं, एनीवे कह सकते हैं, बाय द वे कह सकते like हैं। I don't like go so far. आई डोंट गो सो कैसे फार। कहते हैं? I don't go so far. हाँ, मैं आसपास के शहर में ही जाता हूँ। I usually like to go around the area. I would like to go local area. We हाँ can आई say हाँ आई यूजुअली गो टू नियर बाय सिटीज। nearby cities. या आपको कहना है कि आपके यहाँ से दिल्ली पहुंचने में कितनी देर लगती है। How long will take to reach Delhi from your place? हाउ लॉन्ग डज इट टेक Does it take? How long does it take टू to रीच। reach Delhi हाँ, फ्रॉम योर प्लेस। from your place? ओके। आपको बताना है जितना भी समय लगता है आप इंग्लिश में बताइएगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली फ्रॉम योर प्लेस, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। Sir, it's usually take 2.5 hours. ओके, सो इट टेक्स 2.5 hours टू गेट टू दिल्ली फ्रॉम योर प्लेस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस सर्विस मैम। In the teaching sector, I have been last 10 year, more than 10 years, sir. ओके, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू रिटायर। 2045, 2045 maybe. Yes, 2045. Okay, so you still have to work for 20 years. Yes, Okay, so yes. that's too long. Mm. Okay, and suppose you perform well and your job goes well. So, what do you think you can become? To what post you can be promoted? Sir, it's a depend on the policy of government. Earlier, government have a policy. Just within year, we will expected to the promotion as a vice principal, and after that, there is a principal. After that, and there is a name of the post CBO, Hmm. and that is the chief block education officer called. Uh-huh. Do you know the? So Yeah, these kind of the post. we also have BDO or BSA here in Uttar. Yes, like that, the Yeah, video, exactly. like that, the same equivalent post, Okay. just both are the equivalent. Okay. So, what do you think you will be by the time you retired? It's a depend on the policy, sir. Just I told you that when the government changed their policy changed, there is no fixed rule and regulation. Okay, so So some, uh-huh. yeah. So if we go the smoothly and according to the rule and regulation, it's a go the higher level. We can say the chief officer of the district. We can reach there. Okay, so it actually does not completely depend on your performance. It depends on policies as well. Only policies. Governments have policy changed according to the education minister, sir. Okay, so government keeps changing policies time to time. Government keeps changing policy, and every 5 years we face a new kind of the situation. Okay, and do you also give tuitions or something from your home, ma'am? No, sir. I haven't much more time. Okay, so And just so I nowadays I am focus and I want to focus on my speaking skills because I am not fluent speaker in the English especially. So if I have a time to I want to spend on to enhance my this skill. okay, so do you ever speak to someone in a WhatsApp group, ma'am? Because the conversations are No, always going on there. no, sir. I haven't courage to take any conversation. I You have fixed 4 or 5 friends. I usually talk with them.
No, ma'am, you should try to make good use of our group because the more you speak, the better you get. Yeah, yeah. But I have a hesitation. But start listening to the conversation, and you will automatically get the courage and feel like speaking something. And Yeah, once you many speak times it, sir, I thought I should join, but oh my I God. haven't still created. No, ma'am, don't be afraid. Brace yourself and take some time to talk to the participants because most of them speak very good English. And while listening to them, you will learn a lot of new phrases and sentence structures instead of talking directly. Yes, yes, sir. I know. I agree totally with you. I try to join today, sir. Yeah. And as you can see, the conversation is already going on there. A lot of people, seven participants are talking in a group.